आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट of students of certain class in a certain city. Now they have given you heights in centimeter and here they have given you number of students. Now if you see here 160-162, here they have given 163-165, 166-168. we can see that कि ये नंबर आपकी कैसे है, they are not in uniformly placed. So what we will do, just we will make them a class interval, nice class interval, that every height should come. So what we will do, you can see here 160 and 162, after that 163 is there. That means lower limit में आपको क्या करना है, -0.5 and upper limit पे you have to add 0.5, then only it will come. So now what we have to do, first we have to go for a new, or you can say class interval. Now class interval is what, 159.5 to 162.5. we are adding this side and subtracting this side. Again here it will come 162.5 to 165.5. next here it will come 165.5 to 168.5. again it will come here 168.5 to 171.5. this will come here 171.5 to, next is 174.5. so these are the class interval. Next what we have to do, we will go for, they have given you the frequency, but in median what is our formula, that we will write first. Median is equal to L, or you can write lower limit LL, anything you can write, L plus, now in bracket it will be n by 2 minus CF by F into H. Now we will understand this. What is that? L is your lower limit of that class. How we will find out? First we will find out N. N is number of frequencies. That means this. Total. From here to here, just add them. That is your N. Now we will write here N. So N is what? 8 plus 5 is 15. 15, 16, 15 plus 10 is 25. 25 plus 5 is 30. 0 and 3 carry. 3 plus 1 is 4, 5, 6. 6 plus 4 is 10. 11, 12. 2 and 1 carry. Now it will come as 1, 2, 3, 4. 4. 420. 420. N is 420. ठीक है. Now, तो N तो हमने निकाल लिया. Next comes your CF. That means cumulative frequency. So now we will go for a cumulative frequency. That is your like this CF. CF में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला आपको सेम लिखना है 15. नेक्स्ट क्या करना है 15 एंड उसके नीचे वाला दोनों को ऐड करना है. यू हैव टू ऐड दिस एंड दिस. तो देखो कितना आ रहा है आपका, इट विल कम एज 3, 3 एंड 1, 133. नाउ 133 एंड उसके नेक्स्ट वाले को ऐड करना है.
तो it will come as 275. Next 275 plus 127. So it will come as 12, 0 and 4. 402. 402 plus 18. So it will come as 420. Now you can see your n and this is matched. That means हमारा कैलकुलेशन कैसा है? It's accurate. ठीक है. So now we will go for n by 2. So that means 420 n by 2. 420 by 2. It is 210. Now you can see 210 आपका कहां पर लाई कर रहा है? In CF. तो it is in between this. That means we will take always बड़ा वाला, big one. So this is your, now we can say it is your median class. तो ये आपका मेन है. From this only we can go for. So now we will put the values. L is what? So L is your this one, है ना, lower limit is your this one. N by 2 is your 210. CF is your, ये देखो इससे पहले वाला, this one is your CF. And what is your F? उसी क्लास में देखो, मीडियन क्लास में F is what? 142. Substitute these values, you will get your median. Now we will substitute, that is your L means lower 165.5 plus, now in bracket it is 210 minus CF is your previous one 133 by F. F is your 142 into H. H आपका क्या है? क्लास साइज. तो क्लास साइज हम कैसे लेते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो नाउ वी कैन से दैट, कोई भी आप ले सकते हैं, ऑल आर इक्वल. तो हमने यही ले लिया 168.5 minus 165.5, that means 3. तो we can write here 3. Now इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका. It will come as 165.5 प्लस, इसको माइनस करो 7, अगेन 7, तो 77 by 142 into 3. ठीक है. नाउ अब इसको कट कर दो. 4 5 6 7 है ये, और वो 77 है. दैट मीन्स 11 से भी नहीं जा रहा है ये, तो 2 से डायरेक्टली कट करते हैं. ठीक है. और अदरवाइज जस्ट मल्टीप्लाई दैट एंड डिवाइडेड बाई 142. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है आपका 165.5 प्लस 231 बाई 142. नाउ इसको आप डिवाइड कर दो. तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वी कैन गो फॉर दिस हियर 231 and 142. तो 1 टाइम्स इज 142, ये आपका 9 आ गया. नेक्स्ट आपका देखो क्या है, मिनिमम 2 डिजिट लेना है आफ्टर डेसिमल. तो ये देखो आपका क्या है 2, दैट इज योर 89. तो वी विल पुट पॉइंट हियर, 0 हियर. तो 890, दैट मीन्स इट विल गो एट अराउंड 6 टाइम्स. So now we will check 142 into 6, 12, 1, 25, 2, 752, 852.
यस, तो 0.6 852 माइनस करो, इट विल कम एज 8 and 380. So 380 we can say it will go at around 3 times. So 142 into 3, 6, 12 and 426. So not 3, 2 times only. So 1.62. So now it will come as what? आपका देखो क्या आ रहा है, 165.5 प्लस 1.62, दोनों को ऐड करो, वी विल गेट 2 6 plus 5 is 11, 1 carry, now 6 plus 2 is 7, 6 1. तो दिस इज योर मीडियन 167.12. ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से निकालना।